Good morning everyone and welcome to another long video. This video is going to be all about my life during exam day. So today is the first internal exam of second semester of biochemistry and nutrition. जिसकी थोड़ी बहुत preparation मैंने दशहरे की छुट्टी में कर ली थी. But still I have a lot to revise. So I woke up a little early this morning to revise everything as we got 4 chapters in biochemistry and few topics in nutrition to cover. In biochemistry we have to cover carbohydrate, protein, clinical enzymology and immunochemistry. And in nutrition, I've completed my syllabus and revised once. Still, I need to revise once that I got my confidence on that. Usually on exam days, I like to get up early and revise everything, whatever I've studied till now, because it kind of freshens up all the topic and gives you the confidence to write in exams properly. Internal exams are a little easier than university exams because obviously you don't have to cover whole syllabus. Instead of that, you just need to cover half of the syllabus, but at the same time, you don't get enough time to prepare. But somehow, after getting in med school or nursing school, we develop this ability in ourselves that we can study more in less time and cover the entire syllabus. After 2.5 hours of productive study session, I was not able to revise everything. So I decided to continue my revision in classes because my exam was from 11 to 1 p.m. and so I had almost 2 hours which was quite enough. So I took a shower and got ready. After that, I had my breakfast जिसमें पोहा आया था, which I really don't like it or I can say I just hate it. But I don't have any options, so मैं जितना खा पाई मैंने खाया. उसके बाद I am superstitious, so I like to believe in a superstition that दही चीनी खाने से एग्जाम अच्छा होता है. क्योंकि यहाँ मैं दही नहीं खाती हूँ बल्कि लस्सी पी लेती हूँ और मुझे लस्सी बहुत पसंद है. Apart from that, my mama always calls me and tells me to have it because she also believe in that. उसके बाद I left for college and उसके बाद थोड़ी देर रिवाइज करने के बाद पेपर हो गया जिसमें nutrition was very well and biochemistry was not that well. कोई रिएक्शन आपकी तरफ से? एक ही रिएक्शन है कि पूरा पेपर सादा गया. मैम क्या हम लोग को बस मेरा नाम और रोल नंबर ना पता हो. After exam, I came back to room from 1 to 2 and had my lunch. उसके बाद 2 to 3 I attended a lecture and फिर there was a kabbadi match between nursing and MBBS students. So we all went to support our teams. The match was also the part of celebrexia. Because of the college fest, the building is decorated with lights and it looks so beautiful. Here what we discovered today in the college, the architecture model of the IGIMS building. After this long day, I just came back to room and relaxed for a while. And because of the exam, I was really busy and was not able to clean my room. So my room is a mess. And so now my priority was to clean my room as soon as possible. So I started with my bed. I cleaned everything. I changed my bedsheet. I changed my pillow cover. And I was listening music in my speaker and was dancing in the middle of that and enjoying my moment and I was loving my time spending and cleaning. जैसे जैसे मेरा room साफ होते जा रहा था, I was feeling kind of better and somehow cleaning my room made me feel good about myself. उसके बाद I cleaned my drawer, my table, my cooler and कुछ कपड़े थे अलमारी में सेट करने को तो उसे अच्छा सेट किया and और भी कुछ काम थे तो उसे भी जल्दी फिनिश किया. I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met, jumping in the pool, talk to you, dripping wet. Nervous when I speak, so I trip on my tongue. Never thinking you would be my number one. And this is how my room looks like after cleaning it. My tongue, never thinking you would be my number one. उसके बाद I was feeling tired and hungry and wanted to have a tea. तो फिर किचन में जाके थोड़ी सी चाय बना ली. उसके बाद शांति से बैठ के I enjoyed my चाय. फिर थोड़ी देर पढ़ने के लिए बैठ गई because next day was another test of health assessment module. And I was not able to study that much. तो थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद फोन चलाया and थोड़ा relax किया. उसके बाद I had my dinner by watching a movie. It was खेल में starting अक्षय कुमार, तापसी पन्नू and so on. So जितने देर डिनर किया उतने देर के लिए मूवी देखी. अराउंड 30 मिनट्स के लिए मैंने मूवी देखी. उसके बाद वापस से मैं पढ़ने के लिए बैठ गई एंड थोड़ी देर वापस से पढ़ाई की. उसके बाद आई वांटेड टू बी लिटिल प्रोडक्टिव और मैंने बहुत टाइम से बुक नहीं पढ़ा था. इस बुक को मैंने ऑलमोस्ट आधा खत्म कर दिया था लेकिन बहुत दिनों से ना पढ़ने की वजह से आई वाज मिसिंग आउट द कंटिन्यूएशन ऑफ द बुक. सो आई वांटेड टू रीड द कंप्लीट बुक बट बिफोर दिसंबर आई वांट टू कंप्लीट दिस बुक. ऐसा ना हो कि उस हाफ को पढ़ने के चक्कर में पूरा कंप्लीट न कर पाऊँ एंड एनी हाउ आई वांट टू फिनिश इट बिफोर दिसंबर. सो आई स्टार्टेड लिसनिंग ऑडियो बुक्स टू रीड द फर्स्ट हाफ वेरी सून और एज सून एज पॉसिबल ताकि जल्दी से मैं सेकेंड हाफ पे आ सकूँ और मैं बुक खत्म कर सकूँ. एंड ऑफ कोर्स ओनली रीडिंग बुक इज नॉट द पर्पस. द एक्चुअल पर्पस इज टू अंडरस्टैंडिंग द बुक एंड अप्लाइंग दोज लर्निंग इन माई लाइफ एंड बिल्डिंग हैबिट टू ग्रो 1% एवरी डे. आफ्टर दैट आई फिनिश माई नाइट रूटीन एंड हाइड्रेट माई सेल्फ. उसके बाद टुक सम आर्गुमेंट फॉर द मॉर्निंग एंड लास्टली थोड़ी देर घर पे बात किया एंड सोने चली गई. एंड दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो.
video, and I'll see you in the next Sunday. Bye.